Hey guys, good afternoon to all of you. How you all guys? Perfect, ekdam fantastic. Too good. Guys, today's session is to revise one of the questions that has come in Jan 21 paper. But before I go to that, guys, let me remind you that आपका July 21 का exams आ रहा है. So guys, I've organized 1 day full marathon series. Guys, we will revise the entire SFM. Are we exactly clear with that one? I've got another video for the same where I've actually punched in all the details of the lecture, and this lectures will be also taken from a separate book prepared specifically for the revision on the final day, that is known as final push. So ये सारे लिंक्स भी आपको इसके एक पहले के वीडियो में मिल जाएंगे गाइस, ठीक है. ये जस्ट एक रिमाइंडर था. गाइस, विच क्वेश्चन आई वांटेड टू टेक इट टुडे इज दिस वन. गाइस, Jan 21 के न्यू एग्जाम में आया था, सीरियल कोरिलेशन पे क्वेश्चन था, एंड पीपल वे रियली अमेज्ड कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था एंड पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड इसे कहाँ से करना है. आई डिड नॉट टेक दिस lecture in recordings before, guys, because you know, I thought इनके solutions आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. But when I saw the solution from ICI, it was very complicated. I will not say solution is wrong. Solution is extremely correct, but it's very complicated. So I thought of making it simple for you guys. ठीक है? Let us read this question once, guys. है ना? First, question number 1A, Jan 21 का paper. Mr. X is of your opinion that market has recently shown weak form of market efficiency. Guys, now when I say weak form of market efficiency, I remember a market efficiency theory by Professor Eugene Fama. Before I answer this, guys, a little bit of backward understanding of this theory is very important. Now, what was this theory all about? The market efficiency theory by Professor Eugene Fama was based on the random walk theory. So, according to Professor Eugene Fama, according to market efficiency theory, nobody can predict the market. So guys, the base is that nobody can predict the market. There are such large volumes of buyer and seller, guys, working together in tandem that it is impossible for one single person to predict what's going to happen in the market. So guys, when we say that market is efficient, if I say that market is efficient, it means nobody can predict the market. Are we exactly clear with that one? Now, if there is someone, guys, or if there is some correlation in the market where people can predict the movement of the market, that means market is not efficient. Are we exactly clear with that one? It means that market is not efficient. So base याद रखना है आपको पहले तो theory का. What does the theory tell you? The theory tells me that according to Professor Eugene Fama, the believer of random walk theory, that market is said to be efficient when nobody can predict the market. ठीक है, चलिए. In order to test the validity of impression, he has collected the following data relating to the movement of Sensex in last 20 days. Now they have given you plethora of data just to confuse you. Day 1 से लेके day 20. Not everything is irrelevant, but open, high, low कोई ज़रूरत नहीं है. So guys, हम सिर्फ हर एक दिन के closing prices को देखेंगे. Are we exactly clear with that one? So guys, 20 days के closing prices का information है हमारे पास, and they are asking you to test the weak form of market efficiency using auto correlation test taking a time lag of how many days? 10 days. मतलब guys, ये डेटा को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेटा फर्स्ट 10 days, सेकेंड पार्ट ऑफ द डेटा सेकेंड 10 days. Are we exactly clear with that part? सो कैसे टेस्ट करना है, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट कैसे करना है गाइस, मतलब हमें कोरिलेशन निकालना है. सिंपल सा मीनिंग है, वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन द डेट ऑफ फर्स्ट 10 days विद द डेट ऑफ नेक्स्ट 10 days. दैट्स इट. इट्स रियली नॉट कॉम्प्लिकेटेड गाइस. सो सी हाउ डू वी कैलकुलेट कोरिलेशन गाइस. कॉर निकालना आता है कि नहीं आप लोग को? कॉर का फॉर्मूला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, कॉर फॉर्मूला इज स्कोप एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई. Now what is x and what is y? Guys, we are required to divide this 20-day ka data into 10 days, 10 days. First 10 days and next 10 days. So first 10 days will be taken as x and next 10 days will be taken as y. And how will we work? Have a look. मैंने Excel sheet में solution बना के रखा है. So I'll just show you that solution because I never wanted to work, कि यहाँ पे बैठ के मैं आपके साथ काम करूँ और पूरा टाइम वेस्ट करूँ आपका. So मैंने आपको पूरा solution बना के रखा है. Excel में उसका presentation कर रहा हूँ. So guys, first 10 days का closing prices, now if you look at it,
गाइस फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइजेस है हमारा 33,453.99, सो दिस इज 33,453.99. सेकेंड डे का क्लोजिंग इज 33,434.83, 33,434.83. So guys, I've put 20 days ka data. So this is first 10 days ka data. This is next 10 days ka data. And then I've checked the movement. What are the changes? So guys, from 33,453 to 33,434, can I say there's a fall in Sensex? So guys, if you can look at, my formula here, it is C7. That is second day ka calculation or closing minus first day ka closing. And it shows me negative. ठीक है guys? I hope you are clear with this. Got it? So guys, the differences ढूंढना है. So differences from 1 to 2, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 4. अकॉर्डिंगली मैंने सारे डिफरेंसेस निकाल लिए. कैसे किए? अगर आपको 10th डे का डिफरेंस देखना है तो 10th डे का क्लोजिंग माइनस 9th डे का क्लोजिंग. अगर आप 9th डे का क्लोजिंग देखेंगे तो 33,301 था. 10th डे का क्लोजिंग 33,259 था. शेयर मार्केट इज फॉलिंग. सो मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट इज फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग. आर वी क्लियर? गाइस नेक्स्ट 10 डेज का डेटा स्प्लिट करके अलग जगह पे लिखना है. तो नाउ 11 से लेके 20 का डेटा और फिर से शेयर प्राइस मूवमेंट्स. सो गाइस वी आर गोइंग टू गेट 9 मूवमेंट्स इन द फर्स्ट 10 days and 9 movements in the next 10 days. That's it. अब वो 9 movements को, पहले 9 movements को x बोलेंगे और next 9 movements को y बोलेंगे guys, और उसका core निकालेंगे. So I'm going for the next 10 table. Guys, period 1 to 9, that is 9 movements. Guys, x if I'm observing there, is it 19.96 और मैंने वही 19.96 यहाँ पे ले लिया है 2.9 और इनफैक्ट मैंने सिर्फ कॉपी कर दिया ऊपर से. So guys, this is my x. गाइस इसका SD निकालना है. सो पहले टोटल 9, पूरे 9 मूवमेंट्स का टोटल 194. गाइस डिवाइडेड बाय 9 उसका एवरेज. अगर आप ऊपर फॉर्मूला पढ़ते जा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट गाइस. उसका एवरेज निकालने के बाद हम लोग गए D पे. नाउ व्हाट इज़ D? गाइस इफ़ यू रिमेंबर D इज़ नथिंग बट x माइनस x बार, है ना? That is what my language says D. If people have studied SFM from me, that is D. So x minus x bar, x minus x bar, x minus x bar, and then D square. Guys, D square का summation ले लिया first 9 days का, and then I divide it by 9. So I got variance, और variance का root निकाल लिया तो I got SD. This is SD of share price movements of the first 9 days. Guys, next 9 days जो movement था हमारा उसको मैंने y कंसिडर कर लिया है. सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज कंसिडर्ड एज y. ठीक है. उसका पहले 9 मूवमेंट्स के टोटल 68.08, उसका एवरेज 7.56. गाइस दिस एवरेज इज नथिंग बट x बार. नेक्स्ट वन फिर से एक बार d, दैट इज x माइनस x बार, एंड d स्क्वायर दैट इज x माइनस x बार द होल स्क्वायर. गाइस उसके 9 पीरियड्स का टोटल. आर यू गेटिंग दैट? गाइस टोटल डिवाइडेड बाय 9 इज वेरियंस. So guys, this is basically variance, and guys this is basically SD. Are we exactly clear? This is variance and this is SD. ठीक है. Guys next one is dx dy. So dx dy कैसे कैलकुलेट करना था guys? D of x that is 2.5 multiplied by D of y. If you remember cove निकाल रहा हूँ मैं core निकालने के लिए. ICA का सोल्यूशंस देखेंगे तो पता नहीं कौन सा फॉर्मूला निकाल के पहले बीटा निकाला और बीटा के बाद core निकाला है. guys मैंने एकदम नॉर्मल सा काम किया है. So I have calculated cove first. So guys dx dy that is 2.5 multiplied by 26.8. Now I have calculated dx dy divided by 9 कर दिया. If you're catching this up guys, so divided by 9 करने पे अपने को क्या मिल गया? cove xy. Guys finally cove xy निकालने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया. What is cove xy का core का फॉर्मूला? cove xy is equal to core xy is equal to cove xy divided by SD of x SD of y. So guys that is 182 divided by 17.08 into 26.31. यहाँ पे मैंने उसका टोटल करके रखा है. So guys this is 182.16 divided by 449. I'm getting a core of 0.405. Got that? Now guys core is positive. So the final answer, guys, if the core is positive, definitely the date of first 10 days is correlated to the date of the next 10 days. There is a moderate correlation between the return of two periods. And guys, if there is a moderate correlation, that means people are able to predict the market. Correlation है ना भाई?
So if there is correlation, they are able to predict the market somewhere. I'm not saying at all the points, but somewhere. So guys, if they are able to predict the market, market is efficient or market is inefficient? Guys, if people are able to predict the market, market is not showing efficiency. So guys, can be concluded that market does not show the weak form of efficiency. Are we exactly clear? For market to show the efficiency, guys, the correlation should not have existed. Are we exactly clear with that one? Correlation should not have existed. That's what I'm saying. The most important point to remember in Eugen Pharma's theory was that the market is efficient when people will not be able to predict. But if people will be able to predict, then market is not efficient. So this market does not show efficiency. Are we clear? Too good. Guys, I want you to solve this question once. मैंने solution ready रख के फिर आपको दिखाया था ताकि मैं आपका time waste नहीं करूँ ज़्यादा. But this is the best way to solve the answer. A little bit different than what ICI did. ठीक है? चलो. Guys, thank you. Love you all. Take care. Bye-bye. And please attend, guys, a reminder, the final push if you are giving this attempt. That is July 21. Love you all. Take care.